Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, dear aspirants, this is Ali Shahab, Precis composition teacher at CSPs Academy, Islamabad. Today we shall discuss the solution of Precis composition paper 2022. So starting with question number 1, which is obviously the most important question in Precis composition, it is that of Precis writing. Precis writing के question number 1 में वही टेक्निक इस्तेमाल की गई है जो year 2000, 2008, 9, 10 एंड 14 एंड 15 में इस्तेमाल की थी। ये उस तरह की प्रेसी है जिसके अंदर एक पैराग्राफ या कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स दिए जाते हैं और इसके अंदर कंट्रास्ट ट्रांजिशन वर्ड का इस्तेमाल होता है। रिमेंबर, कंट्रास्ट ट्रांजिशन वर्ड्स आर दोज वर्ड्स जहां पे इंफॉर्मेशन जो कंट्रास्ट ट्रांजिशन वर्ड के बाद आ रही होती है वो ज्यादा वैल्यूएबल होती है और पिछली इंफॉर्मेशन से मुख्तलिफ होती है। ये वर्ड्स कौन से हैं? however, but, on the other hand, in contrast, conversely, etc. etc. So the same course of action is adopted in the Precis of 2022. इसके अंदर उसने ग्रीक माइथोलॉजी से जो है एक टेक्स्ट आपको पूछा है और इसके अंदर 4 पैराग्राफ्स हैं और स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि इंसान हमेशा अपने खौफ को या जिंदगी के राज जानने के लिए वो सुपरनैचुरल पावर्स जो है उनका सहारा लेता है और इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि किस तरह कदीम यूनान में इंसान इन सुपरनैचुरल पावर्स की तरफ जाता था और इनसे मदद तलब करता था या जवाबात चाहता था। सो शुरू के अंदर इसने जो बताया कि उसको इस तरह के साइंस दिए जाते थे जिससे उसे अंदाजा होता था कि उसके सवाल का जवाब क्या है या उसकी कोई जो सेक्रीफाइस है वो कबूल हुई है या नहीं हुई है, या जिस जवाब की तलाश में वो गया है, जिस मुराद की तलाश में वो गया है, क्या फायर का रुख किस तरफ था, किस डायरेक्शन में था। तो वहां से उसको ये साइंस देख के अंदाजा होता था कि वेदर ही हैज गॉट हिज विशेस फुलफिल्ड और ही हैज गॉट हिज आंसर्स एड्रेस्ड। पहले 2 पैराग्राफ्स में उसने इसी चीज की तरफ इशारा किया, मगर चौथे पैराग्राफ में आई बिलीव द थर्ड पैराग्राफ में उसने कंट्रास्ट ट्रांजिशन वर्ड हाउएवर का यूज किया। एंड रिमेंबर, व्हेन इट कम्स टू हाउएवर तो इसका मतलब यह है कि जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है शायद वो इतनी वैल्यूएबल नहीं रही है, इसके बाद वाली जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा वैल्यूएबल है और थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है। हाउएवर के बाद जो उसने बात की है वही जो है मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है स्टूडेंट्स के लिए, विच इज के ये जो साइंस हैं ये शायद उस तरह समझ में ना आते हों अफराद को। तो जो कदीम यूनानी लोग सुपरनेचुरल पावर्स की तरफ जाते थे अपने सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए, उनको बिल आखिर इस तरह के अवतार मिल गए, इस तरह के जो हैं वो ऑरेकल्स मिल गए जो कि डायरेक्टली जो है खुदा का पैगाम उन तक पहुंचाया करते थे। सो हाउएवर के बाद इन्होंने जो मेंशन किया है उसके अंदर यही मैसेज दिया है कि किस तरह सर्टन टेम्पल्स जो हैं उसके अंदर ये ऑरेकल्स बैठे होते थे और जो खुदा का पैगाम है, जो सवाल पूछा गया होता था उसका डायरेक्टली जवाब देते थे। एक तो इससे साइंस की कंफ्यूजन, साउंड्स की कंफ्यूजन जिनसे वो पहले मदद तलब कर रहे होते थे, जवाबात के मुंतज़िर होते थे, एक तो वो इनकी सॉल्व होगी। दूसरा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए उन तमाम मैसेजेस के जो वो चाहते थे कि उन तक बराह रास्त पहुँचे। सो हाउएवर के बाद की जो स्टोरी है उसके अंदर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश किया गया विद द हेल्प ऑफ दोज प्रीस्ट्स, दोज मैसेंजर्स जो कि ज़्यूस और अपोलो का जो एक टेम्पल है उसके जरिए डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट करते थे। सो दैट वाज अ वेरी गुड प्रेसी, अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन बेस्ड ऑन 4 पैराग्राफ्स एंड द ओरिजिनल स्टोरी स्टार्ट्स विद द थर्ड पैराग्राफ वेयर द मेन आइडिया कम्स इन फ्रंट ऑफ द रीडर, which is obviously about the importance of oracles in Greek history, and the suitable title would be Oracles as the voice of gods, oracles as the voice of Greek gods, yeah, the importance of oracles in ancient Greece. So that would have been suitable titles when it comes to Precis. और यहाँ पे अगर हम टोटल वर्ड्स इसके देखें तो अराउंड ये जो हैं 330 प्लस वर्ड्स आपके जो है Precis के बनते हैं, विच मीन्स के इसकी 1/3 अगर आप लेके आएंगे 110 to 120 ये आपका जो है थ्रेशोल्ड इस पे होना चाहिए। सो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो हमारा स्पेशल फोकस होगा वो यही होगा जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं। हाउएवर से जो पहले की डिबेट है उसको कम से कम हम कवर करेंगे, हाउएवर के बाद वाली जो डिबेट है उसको हमने ज़्यादा वैल्यू करना है। सो दैट वाज अ वेरी गुड पैराग्राफ बिकॉज द मैसेज वाज क्लियर एंड द इम्पॉर्टेंट थीम वाज आल्सो मेंशन्ड आफ्टर द थर्ड पैराग्राफ। यहाँ तक जी ये Precis राइटिंग का आपका क्वेश्चन है, विच इज़ बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन। However, when it comes to रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर
मोर और लेस वही चैलेंजेस आए हैं जो आमतौर पे स्टूडेंट्स को 2016 में और शायद 2017 के एग्जाम में फेस करना पड़े थे, जिसके अंदर कंटेंट जो है वो बहुत हद तक बड़ा लिमिटेड है। बिकॉज व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस, तो चंद क्वेश्चंस में आपको कंटेंट सफिशिएंट मिलता है, मगर चंद क्वेश्चंस में आपको कंटेंट उस तरह सफिशिएंटली नहीं मिलता है। सो इसके अंदर दोनों टेक्निक्स उसने यूज की हैं। दी रेफरेंस क्वेश्चन, जिसका जो है एग्जैक्ट आंसर आपकी टेक्स्ट में है एज इट इज, आप वहां से पिक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है इन्फ्रेंस क्वेश्चन, विच मीन्स इट्स बेस्ड ऑन योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर क्रिएटिविटी जो है आपने मद्देनजर रखनी है, मगर इररेलेवेंट डिटेल्स आप उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 वाज, हाउ डज द ऑथर कैरेक्टराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी? वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू स्टार्ट योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज, बजाय इसके कि आप पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ें, दैट वाज वन सिंगल पैराग्राफ एंड अ लॉन्ग पैराग्राफ, आप सबसे पहले जो काम करें उसके क्वेश्चंस पढ़ लें। सो बाय द टाइम यू फिनिश द क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यू विल हैव अ फेयर आइडिया व्हाट दिस टेक्स्ट इज ऑल अबाउट। सो जिस वक्त आप ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो दीज क्वेश्चंस सर्व एज एन आउटलाइन, आपको मेन थीम जो है वो भी पता चल जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाउ डज द ऑथर कैरेक्टराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी? Question number 2 is, why does civil society strive towards better socialization driven by tolerance? Number 3, what do you understand by the term social capital used in this passage? Number 4, why does a civil society assume the role of a public stakeholder? And the last question is, what impact is feared by the weakening state of civil society? So ये 5 questions पढ़ के मुझे अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया कि that text is all about the roles and responsibilities of a civil society. So again, a very good text selected by FPSC. And when it comes to question number 1, how does the author characterize the concept of civil society? The civil society के concepts जो basics हैं उसकी बात की है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बड़ी गुड लक होगी कि क्वेश्चंस भी एग्जामिनर अगर उसी सीक्वेंस में अरेंज करे जिस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। अदरवाइज अनलाइक द प्रीवियस पेपर्स, उसके अंदर क्वेश्चंस भी वो जंबल कर सकता है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर हो सकता है मिडल में हो, दूसरे का एंड में हो, तीसरे का स्टार्ट में हो। सो यहाँ पे जो है उसने वो सीक्वेंस जो है क्वेश्चंस का अपना बरकरार रखा है बहरहाल। So the concept of civil society refers to all places where people gather to have conversations and follow common interests. So इसके अंदर कोई ऐसी नई बात नहीं है, सिविल सोसाइटी का मकसद यही होता है। And civil society exists where the people spend their leisure hours to have informal meetings outside homes. तो इसके अंदर जिस एस्पेक्ट की तरफ इसने आपका ध्यान दिलाया कि घर के बाहर जो है इनफॉर्मल गैदरिंग होती है, तो वहाँ पे ये अफराद इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने का मकसद क्या है? द पर्पज इज टू शेयर कॉमन इंटरेस्ट, टू शेयर their concern on common issues as well. So moreover, they also try to influence public opinion and public policy. So इस चीज़ को भी जो है ये बहुत ज़्यादा जो है influence करते हैं। Question number 2 is, why does civil society strive towards better socialization driven by tolerance? Dear students, when it comes to reading comprehension, often 2 techniques are discussed, skimming and scanning. स्किमिंग इन इज बेसिकली कि आपने जो मेन आइडिया है उस टेक्स्ट का जो है सबसे पहले वो समझना है। तो स्किमिंग का प्रोसेस, बजाय इसके आप वो टेक्स्ट पूरी पढ़ें और उस पर अपने जो है 5-10 मिनट लगा दें, रीडिंग द क्वेश्चंस वुड सर्व द प्रोसेस ऑफ स्किमिंग। सो व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस यू हैव द फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस टेक्स्ट इज ऑल अबाउट। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू स्कैनिंग, तो क्वेश्चंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप स्कैन करते हैं टेक्स्ट में। सो अगर आप उनको स्कैन करेंगे टेक्स्ट में तो ऑब्वियसली उस क्वेश्चन का आंसर भी उस वर्ड के आसपास ही होगा। तो टॉलरेंस जो है यहाँ पे जो है ऑलरेडी मेंशन है, ये वर्ड अगर आप स्कैन करें तो आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाई डज सिविल सोसाइटी स्ट्राइव टुवर्ड्स बेटर सोशलाइजेशन ड्रिवन बाय टॉलरेंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टॉलरेंस? द पार्ट ऑफ द वर्ड सिविल इम्प्लाइज is tolerance and the accommodation of pluralism and diversity. और यही बात अगर आप देखें, this is what I call the inference, कि ओवरऑल आइडिया टेक्स्ट का क्या है कि उसके अंदर दूसरे को बर्दाश्त करना है, तनव्वु प्लूरलिज्म जो है ये आपने बरकरार रखना है। This tolerance is a key to better civilization for which a civil society strives. There is always a difference of opinion when people sit together. However, for the sake of common interest, they tolerate social differences and learn to maintain solidarity in group. There's a valuable skill that augments multicultural nation. So more or less इसने यही बात जो है अपने वर्ड्स में इस राइटर ने यहाँ पे बयान की है, जिसको आपने जो है इन इनडायरेक्ट स्पीच मजीद जो है बेहतर तरीके से आंसर की सूरत में लिख दिया। एंड रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, your answer must be a comprehensive one. That means there is a proper beginning, proper middle and proper conclusion. So कभी भी सिंगल सेंटेंस आंसर
आपने इसका नहीं लिखना है, क्योंकि अगर इसमें आप देखें मार्क्स डिवीजन तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन कैरी ऑब्वियसली इक्वल मार्क्स एंड सो अगर इस पे 4 इसके हैं मार्क्स हैं क्वेश्चन के, तो कंटेंट भी ऑब्वियसली फिर उसका जस्टिफाइड होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो कभी सिंगल सेंटेंस आंसर आप ना दें, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोशल कैपिटल यूज्ड इन दिस पैसेज। अगेन सोशल कैपिटल जो है ये पैराग्राफ के मिडल के बाद में जाके यूज हुआ है सोशल कैपिटल, और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस ही जो है वही रेलिवेंट है। सो मोर और लेस यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड या रेलिवेंट कंटेंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। सो सोशल कैपिटल रेफर्स टू इंडिविजुअल्स हु डेवलप अ जनरल कॉमन सेंस ऑफ सोशल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। दिस protects the interest of the society as whole and thus creates an efficient and responsible society. Social capital allows a group to work together effectively. It allows a society to function together as a whole through trust and shared identity, norms, values and mutual relationships. So इसके अंदर भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसका आंसर दिया गया, एब्रप्टली वन सेंटेंस आंसर दे के इस चैप्टर को क्लोज नहीं किया है। सो व्हेनेवर इट कम्स टू आंसरिंग द क्वेश्चन यू मस्ट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर कि जिसको मैं पढ़ूं और मैं कन्विंस हूं कि इस क्वेश्चन को आपने ठीक तरीके से एड्रेस किया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डज अ सिविल सोसाइटी एज्यूम द रोल ऑफ अ पब्लिक स्टेक होल्डर। सो योर क्वेश्चंस आर फॉलोइंग द सीक्वेंस similar to that of the information given in the paragraph. So question number 4 is the answer. A civil society assumes the role of public stakeholder when its interests are undermined. The author gives an example of a group that plays football in a park. The group shall also be concerned about its maintenance. So इसके अंदर इसने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी थी कि पब्लिक स्टेक होल्डर ये कैसे अपने आप को प्रूव करता है। सो एग्जांपल वो यही है कि अगर वो आप पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पार्क की मेंटेनेंस का भी आप ख्याल रखेंगे। इन केस अगर ऑफिशियल्स जो है उस पार्क की मेंटेनेंस में ठीक रोल अदा नहीं करते हैं सो आप उनको प्रेशराइज भी करेंगे। सो अदरवाइज सो द ग्रुप शैल ऑल्सो बी कंसर्न्ड अबाउट इट्स मेंटेनेंस, अदरवाइज दे विल होल्ड अ कैंपेन टू इन्फ्लुएंस देयर लोकल पॉलिटिशियंस एंड रेजिडेंट्स। इन दिस वे द सिविल सोसाइटी सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सो दैट इज द क्रक्स, दैट इज द मेन आइडिया कि वो लोगों के जो है फायदे की हमेशा बात करती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इम्पैक्ट इज फियर्ड बाय द वीकनिंग स्टेट ऑफ सिविल सोसाइटी। अगर सिविल सोसाइटी आपकी कमजोर हो जाए तो फिर उसका क्या नतीजा निकलता है, उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं, क्या आप जो है फियर्स उसके जहन में आते हैं। सो ये ऑब्वियसली एक मोर और लेस आपका रेफरेंस और इन्फरेंस क्वेश्चन है। इसका आंसर एंड में तो दिया गया है मगर वो बड़ा एक शॉर्ट सिंगल सेंटेंस आंसर ही है, तो इसको भी आपको थोड़ा रेलिवेंट कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे जो है आप एक कन्विंसिंग आंसर इसका बना सकें। सो अ सिविल सोसाइटी voices public opinion on range of issues. If citizens do not involve themselves in voluntary associations, then they will experience not only less trust but also less social connection. Civil society actors keep an eye on how state officials use their powers. So असल जो है इसका रोल एक वॉच डॉग का है कि कैसे जो है सिविल सोसाइटी जो है देखती है कि स्टेट ऑफिशियल्स अपनी काम अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। In the absence of a watchdog, political institutions will not be able to inform effectively and efficiently. So यही जो है इसकी कंक्लूजन है कि जो इन्होंने दी थी कि अब सिविल सोसाइटी में उस तरह फेस टू फेस फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता, हाँ वर्चुअली लोग जो है वो अपना पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये वर्चुअली भी ना करते तो फिर ये किस कदर जो है सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होता। सो यहाँ पे जो है इसने यही बताया कि वीकनिंग अगर कमज़ोर होती हुई ये जो सिविल सोसाइटी है इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। सो नुकसान ऑब्वियसली ये है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपके ठीक तरीके से फिर शायद परफॉर्म नहीं करेंगे। Okay, then comes question number 4, which is always a compulsory question in Precis composition. It is the correction of English errors. So correct only 5 of the following. We shall discuss all of them. So number 1 is, I must walk 2 miles to school every morning when I was a child. So since when I was a child, it's a past tense, I must walk. So you have to replace it with the simple past tense. I walked 2 miles to school every morning when I was a child. Error number 2. After the storm, we had got to pick up some fallen branches. Again, in this sentence, the word got has no placement. So we shall remove got over here and the rest of the sentence would be fixed. So it would go in this way. After the storm, he had to pick up some fallen branches. Number 3. Guitar is most popular instrument among teenage boys
but not girls. So there are multiple errors in this sentence. So first of all, with all the musical instruments, there is an addition of a definite article da. So ज़्यादातर जो musical instruments के साथ da use होता है when it comes to playing it. So the guitar is, the first error is the missing da, and the next one is the superlative degree. The guitar is the most popular. So यहाँ पे most popular था. So the guitar is the most popular instrument among teenage boys, but not among girls. So but not के बाद जो है among girls लिखें कि लड़कियों के दरमियान वो उस तरह मशहूर नहीं है. Number 4, you're not well and I wish you feel better soon. So there are two mistakes in this sentence. You're not well and I wish you feel better soon. So these are two clauses joined by the coordinating conjunction and whenever two clauses are joined by the coordinating conjunction and especially the independent clauses, then you always use a comma before the coordinating conjunction. So सबसे पहले तो यहाँ पे and से पहले आप comma का use करें. You're not well, comma, and I, not I wish, and I hope you feel better soon. Number 5, the grass not looking green now because it is not raining since last month. So again, there are structural errors in this sentence. So the correction would be the grass does not look green now because it has not rained since last month. So you have to use the present perfect. Present perfect joins the past with the present moment. So पिछले जो है महीने से लेकर अब तक, यानी कि the time I'm speaking, at this moment बारिश नहीं हुई. Number 6, the cold air made me shiver a little when I was waiting for him. Here, when is obviously incorrect. While is the correct one, while I was waiting for him. Number 7, I offered my seat to an older woman who just smiled me. So again, there are multiple errors over here. Older must be changed into old, to an old woman who just smiled at me. So there is a missing preposition in this sentence as well. Next is, she packed her bags, carried downstairs and put the back seat in the car. Again, there are multiple errors over here. So the correction would be, she packed her bags, carried what? Carried them downstairs. So उसने bags जो हैं वो सीढ़ियों से नीचे लेके गई. Carried them downstairs and put them in the back seat of the car. Again, the missing preposition in is also there. So these were your 8 correction of errors. So these were the grammatical errors. Now move on towards the punctuation, which is question number 5. So punctuation was one single paragraph and it was fairly predictable. एक easy paragraph था, इतना कोई difficult नहीं था क्योंकि इसके अंदर inverted commas, split sentences, split inverted commas, इस तरह की जो है कोई टेक्निक यूज़ नहीं की गई. सो ज़्यादातर इसके अंदर कॉमास, कॉलन या सेमी कॉलन वही जो है ज़्यादातर आपको इस्तेमाल हो रहा था. सो द पैसेज इज फ्रंट ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन. अनफॉर्चुनेटली कॉमा वी ऑफ्टन मिस अ बेसिक स्कूल लेसन. कॉलन, कॉलन ऑलवेज एक्सप्लेन्स द प्रीवियस आइडिया, हमेशा पिछले आइडिया को कॉलन एक्सप्लेन करता है. एंड कॉलन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्रेज दैट इज, दैट आर, विच इज, विच आर. So if it makes sense तो कॉलन आपने ठीक इस्तेमाल किया. Unfortunately we often miss a basic school lesson, colon, which is every big task consists of several small ones, comma, done precisely and perfectly. Full stop. As a nation, comma, we accurately need to learn the art of breaking down our monad goals into small accomplishable tasks. Full stop. It will reduce frustration, comma, anxiety, comma, depression in society and embarrassment for the government machinery, comma, to, comma, as they don't have to defend their unkept promises. Full stop. So that was your punctuation. Part B of question number 5 is about the prepositions. So यहाँ पे जो है कुछ fixed prepositions इस्तेमाल की गई हैं. So prepositions, despite regular practice, they never seem to win at tennis. Then the number 2 is, with luck we should be in Islamabad by 5 p.m. 3, he went of his own accord, nobody forced him to go. 4, my husband brought some flowers today, he must be after something. 5, my younger son tripped over the cat and fell downstairs. Number 6, you look really
अंडर द वेदर यानी कि मौसम की वजह से अगर आप बीमार हो जाए उसका असर पड़ जाए. आर यू इल क्वेश्चन मार्क. 7. The car went over the brow of the hill and was soon out of sight. 8. He told that his career was in ruins because of pandemic. So these were prepositions, and that was the combination of fixed and simple prepositions. Then comes the pair of words portion. Pair of words, use only 5 pair of words in sentences, clearly illustrating their meaning. Do you still remember, when it comes to pair of words, make those sentences that clearly illustrate their meaning. यहाँ पे वो आपसे इनके meanings लिखने को नहीं कह रहा है. Your sentence must clearly describe the meaning or the context in which they are used. So ये सारा आपके sentence पे base करता है. So the first one is analyst. He is a person who writes annals. K.K. Aziz was a renowned analyst. His research for Pakistan history was rigorous. And the second analyst is the one who conducts analysis. So nowadays, every media person has become a financial, political, or social analyst without having any relevant qualifications. Number 2, jest and jest. Jest is adventure. So King Richard, obviously the King Richard the Lionheart, looked for one grand jest that would call him the greatest legendary crusader of medieval times. Jest, it is a witty statement or a joke. The Pakistani comedian Umar Sharif made people laugh at his every jest. Third, sleigh. Sleigh is a sledge drawn by the horses for passengers. A reindeer sleigh was not only layerly but also wonderful. And the second sleigh is, it means to kill someone violently. The knight went to slay the dragon. Number 4, shoot and shoot. Shoot, the first one is to kill or wound someone with a bullet or arrow. James Bond was sent to shoot the antagonist as he was given a 007 license to kill issued by the American president. Shoot, to fall or descend. Supplies were shooted to the snowbound mountain climbers. Number 5, coin and coins. So the first coin means a projecting corner or angle of the wall. The walls are built of flint cobbles with stone for the coins and windows. Coins, the second one, last longer than currency notes, but they are expensive to make. Number 6 is key and key. The first key is the one that holds the key to success, is your teacher. And the second key means dock. The cruise ship was seen moored at a quay in the port of Cape Town. 7 is while, cunning trick to trap or persuade by deception. So politicians often employ wiles to get the favor of their voters. While, it means during the same time. So Israel attacked Syria while Muslims were busy celebrating Eid festival. 8 is leek and leek. The first leek is the garden herb. Leeks can be used in salads instead of green onions. And the second leak is hole or crack, or the information exposed. So Edward Snowden leaked the information and exposed the ugly faces of many politicians. So that was your pair of words. So this choice was given, use only 5 pair of words in sentences, clearly illustrating their meanings. And the last question is that of translation. And remember, dear students, when it comes to translation, you have got 2 choices, whether to go for the literal translation or the figurative or idiomatic translation, or you may combine both. So उर्दू के अंदर जो इसकी ट्रांसलेशन है, शुरू से एक कॉन्सेप्ट लेके आई है, मगर जो एंड हुई है वो किसी और थॉट पे हुई है. सो हर दौर अपने साथ बहुत से ऐसे मामलात भी लेकर आता है जो किसी के पसंद के नहीं होते, मगर इन्हें कबूल करना पड़ता है. सो एवरी एज ब्रिंग्स दोज चैलेंजेस विच डिस्पाइट देयर डिसअप्रूवल वन हैज़ टू एक्यूज इन. सो एक्यूज इन मीन्स दैट यू एक्सेप्ट इट रिलक्टेंटली विदाउट एनी प्रोटेस्ट. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुदरत शायद हमें आज़माने की खातिर ऐसा बहुत कुछ हमारे सामने रखती है जो हमारे मतलब का नहीं होता, बल्कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, मगर फिर भी इसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए चलना पड़ता है. सो एट टाइम्स नेचर, इन ऑर्डर टू टेस्ट आवर मेटल, प्रेजेंट्स अस विद सो मैनी ऑप्शंस दैट आर नॉट ओनली अनसूटेबल बट ऑल्सो इररेलेवेंट. इवन देन वी हैव टू चूज़ दैम इन आवर लाइफ. हर सदी अपने साथ ऐसी तब्दीलियाँ लाती रही है जो गुज़िश्ता सदियों के मुकाबले में बिल्कुल नई थी. सो एवरी सेंचुरी हैज़ बीन अनलीशिंग दोज चेंजेस विच वर एंटायरली न्यू एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस.
फितरी अलूम व फ़नून की तरक्की ने इंसान को ऐसा बहुत कुछ दिया है जिसे इल्मी और माशी अमल का कचरा करार दिया जा सकता है. So, progress in natural science and technology has given superfluous matter to mankind that could be termed as trace of knowledge and economical activities. कुदरत हमें फल देती है तो साथ ही इस बात का पाबंद भी करती है कि इसके छिलकों को ढंग से ठिकाने लगाएं. If nature blesses us with fruits or opulence, then it also delegates responsibilities to dispose litter properly. अगर ऐसा ना किया जाए तो माहौल की गलाजत बढ़ती है. अदरवाइज इट ओनली इंक्रीजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. सो मोर और लेस अगर आप देखें तो ये उर्दू इंटू इंग्लिश ट्रांसलेशन को इतनी चैलेंजिंग नहीं थी एज कम्पेयर टू द 2021 पेपर. सेंटेंसेज मोर और लेस जो हैं ये ट्रांसलेट किए जा सकते थे विद लिटिल एफर्ट. सो मैनेजेबल थी बहुत हद तक ये ट्रांसलेशन भी. तो ओवरऑल पेपर वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग पेपर. द प्रेसी वॉज interesting. It was a text from the classical Greek mythology, and the reading comprehension was a very interesting test based on civil society, and translation was also manageable. So dear students, that was all regarding our 2022 CSS Precis and Composition paper. Signing off, Ali Shahab, CSPs Academy, Islamabad.